Hello, Jai Hind. In this lecture, I am going to discuss spanning tree. First of all, myself, Dr. Sunil Kumar, working as a professor in IT department. And first of all, we are going to discuss what is a spanning tree. Spanning tree is the subgraph for the given graph that must contain the following three properties. What is that? Subgraph for the given graph. And what are the property? It must contain, the first one, it must contain all the vertices, or we can say nodes. All the vertices, nodes as in the main graph. The second condition, all the vertices must be connected to each other in some way. सारे वर्टिसेस और नोड्स आपस में एक दूसरे से किसी तरीके से कनेक्ट होने चाहिए. एंड थर्ड कंडीशन, इट मस्ट बी acyclic. What is the meaning of that? It should not contain any cycle. Let us take an example. For example, we have given this graph and it containing 4 nodes, and for example, they are connected in that way. So what is the first condition? If we are making the spanning tree for the given graph, it must contain all the vertices. So one possible spanning tree can be all the vertices of node. I have taken A, B, C, D. That is the first condition. The second condition, they are connected in some way. For example, they are connected in that way. And the third condition, it must be acyclic. It should not contain any cycle. And what is the meaning of cycle? If we are starting from node A, then I am not able to reach on that particular node. अगर मैं A node से चलना स्टार्ट करता हूँ, तो उस केस में मैं किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए नोड A पे नहीं पहुंचना चाहिए. ठीक है. Another can be different spanning tree like this. All the nodes or vertices, and for example, this time we are connected in that way. It covering all the nodes. They are connected in some way, and it is not containing any cycle. So there can be number of spanning tree for the given graph. Now in this case, on each edge, one weight is given. For example, for this edge, it is given 2. That is the cost or weight from reaching A to B, or we can say B to A. For example, that is 3, that is 4, 5, 6, and for example 3. So this kind of graph we are calling weighted graph. In the spanning tree, we have to construct MST. That is called minimum spanning tree. That means if we are
making this tree, then in that case, what will be the weight for this edge? The weight is given 2. For this, that is 3. For this, that is 4. Then the total weight will be 2 plus 3, 5 plus 4, 9. So that is the total weight for this spanning tree. For this, that is 3, 5, 2. Now the total weight 5 plus 2, 7 plus 3, 10. In that way, we can construct different spanning tree. But according to this topic, we have to make minimum cost, or you can say minimum spanning tree, that containing the minimum weight. If we are doing this manually, then it will take a lot of time. We can make minimum spanning tree by using the two popular algorithm. One is called Kruskal's algorithm. With the help of this, we will make minimum spanning tree. And the another popular algorithm, that is called Prim's algorithm. That is the two popular method or algorithm. With the help of that, we can construct minimum spanning tree directly. Now we will learn this. For example, we have given this graph A, B, C, D, E and F. And for example, they are connected in that way. And for example, on this S, weight is given 2. For example, that is given 4, 5, 6, 7, 5, 4, 7 and 5. This kind of graph is the weighted graph. And with the help of these two methods, these two algorithms, we have to construct MST. But before that, we should keep in mind there should not be any self loop for the given graph. What is the meaning of self loop? If any node is given, for example, F is given, if it is given like this, that is called self loop. That means starting and ending point are the same. Plus, it should not contain any parallel edge. For example, we have given an edge from C to E, and already they are connected in that way. If some other edge is given like this, that is called parallel edge. So whenever we are constructing minimum spanning tree, we should keep in mind there should not be any self loop, or it should not contain any parallel edge. Now we will make minimum spanning tree for this given graph. So first of all, we are going to do this with the help of first method, that is called Kruskal's algorithm. Now to make the minimum spanning tree, first of all, simply हमें करना क्या है कि जिस लोकेशन पे भी नोड दिए हुए उनको एज इट इज बना लीजिए. फॉर एग्जांपल ए गिवन इज दिस साइड, देन node B is given, C is given, then D is given, E is given, and F is given according to the positions as given in the main graph. Now according to this method, first of all, we will put all the edges in the increasing order.
So first of all, minimum edge is A to B. Just we have write down AB and weight is 2. That is used. I am just putting a tick to ensure that I have taken this as, and we have to put all the edges in the increasing order. Then next one is, that is 4. That is for AC. That is given 4. This is also done. Then after that 5. 4 is also given. That is DE. That is 4. We have to put in the edges in the increasing order. That is this one. I think 4 is done. Then next bit is 5. That is BC. This is also taken. Then BD. That is also 5. Then this is EF. That is also 5. Then BE. That is 6. This one. And the last one is DF. That is given 7. तो हमें सारे करना क्या है, जितने भी एजेस हैं उनको अकॉर्डिंग टू वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें पुट अप करना है. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनिमम वेट इज this 2. That is for as AB. Now if I am connecting A to B, then any cycle is created? No. Then I will connect A to B and we will put a tick that I am using this, and weight is 2. Then AC, if I am connecting from A to C, any cycle created? No. And weight is given 4. So just I am putting a tick on AC. After that DE, अगर मैं D को E से कनेक्ट करता हूं तो वेट कितना है? 4. कोई साइकिल क्रिएट हो रही है? नो. अगेन आई एम रिपीटिंग, साइकिल मींस अगर मैं किसी नोड से स्टार्ट करता हूं और किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए वापस उसी नोड पे आता हूं, दैट इज ए साइकिल. तो जब भी मैं एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट कर रहा हूं, मुझे ध्यान रखना है कोई साइकिल क्रिएट नहीं होनी चाहिए. तो दैट इज ऑल्सो यूज. BC, अगर मैं B को C से कनेक्ट करता हूं तो एक साइकिल क्रिएट होती है. इन दैट केस आई विल नॉट यूज दिस एज, बिकॉज इसको कनेक्ट करते ही साइकिल विल बी क्रिएटेड. ऑलवेज वी हैव टू टेक केयर कि कोई साइकिल क्रिएट नहीं होनी चाहिए. देन BD, अगर मैं B को D से कनेक्ट करता हूं, कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रही है तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा, तो दैट इज 5. अगेन नेक्स्ट EF, अगर मैं E को F से कनेक्ट करता हूं, कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रही है तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा, दैट इज 5. BE, अगर मैं B को E से कनेक्ट करता हूं, साइकिल क्रिएट हो रही है. ठीक है. और अगर मैं DF को करता हूं तो भी साइकिल क्रिएट हो रही है. एंड वन मोर एज दैट इज लेफ्ट, दैट इज CE. दैट इज ऑल्सो 7. If I am connecting C to E, again cycle will be created. So then in that case, I will not use this one. Now, this is the minimum spanning tree. And what is the cost? That is total cost. It will be 2 plus 4 plus 5 plus 4 plus 5. So that is 2 plus 4, 6 plus 5, 11 plus 4, 15 plus 5, 20. So that is the total cost for this spanning tree, and that is the minimum cost. That is the, by using this method, that's we are calling Kruskal. Now we will do the same thing with the help of another method that is called Prince.
just I am rubbing this part. The graph will be same. The next method is Prim's algorithm. We will apply the same method on the above graph. And the second method is that is Prim. Prim's algorithm. Now, in this method, again we will do the same thing. We will make all the nodes as given in the main graph. Here in this location A is given, then this side B is given, then C is given, D, this is E, and this is F. Now, according to this method, I will take any node as a root vertex. For example, that is A, or you can say that is the starting node. The distance from A to A, that will be 0, and for all other node initially I will put infinite, because we don't know what is the minimum edge through which we will connect to one node to another node. This is the starting node. Then if I am connecting A to B, total cost is 2. Now the cost given is infinite. If given cost is greater, then in that case अगर A से B जाने की cost कम है और पहले से given cost ज़्यादा है, तो in that case I will connect. Then I will connect A to B और मैं इसको disconnect करके इसको 2 कर दूँ. अगर यहाँ पहले से cost कम होती, then in that case उसको connect नहीं करते. इसी तरह से adjacent केवल हमारे पास A से B पे जा सकते हैं और A से C पे. अगर मैं A से C पे जाता हूँ तो टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है 4, और पहले से कितनी मेंशन्ड है इनफाइनाइट, तो उस केस में मैं इसको कनेक्ट करूंगा. ओके, दैट इज चेक्ड. तो मैंने इसको टिक कर दिया कि अब मैं ए के अलावा बाकी जो रिमेनिंग नोड है उसको चेक करूंगा. फिर हमें किस नोड से स्टार्ट करना है? वी हैव टू स्टार्ट दैट नोड दैट कंटेनिंग द मिनिमम वेट. तो यहाँ पे बी के पास मिनिमम वेट है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. बी से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? डी पे. अगर मैं बी से डी को कनेक्ट करता हूँ, कॉस्ट कितनी लग रही है 5, पहले से कितनी इनफाइनाइट, तो आई विल गो. तो मैंने इसको 5 कर दिया. इसी तरीके से बी से मैं जा सकता हूँ ई पे. बी से ई पे जाने की कॉस्ट कितनी है 6, पहले से कितनी है इनफाइनाइट, देन आई विल कनेक्ट दिस. बी से सी पे जाने की कॉस्ट कितनी है 5, बट लेकिन वहां ऑलरेडी 4 है. उस केस में बी को सी से कनेक्ट नहीं करेंगे. अगर फॉर एग्जांपल ये 3 होता तो इस केस में मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता और इसको डिसकनेक्ट कर देता जहां से मुझे 4 मिल गया. बट ऑलरेडी वहां 4 है और बी से सी की जाने कॉस्ट वेट जो है वो 5 गिवन है. इन दैट केस आई विल नॉट डू. तो मैंने इसको भी चेक कर लिया. अब जितने भी नोड बच गए ए और बी को मैं चेक कर चुका हूँ. अब बाकी नोड है डी, एफ, ई एंड सी. उसमें से मिनिमम से स्टार्ट करना है. इन दिस केस मिनिमम इज सी. अगर किसी दो नोड के लिए it is containing the same value, then in that case you can start from any node. Here we will start from the C. C से हम कहाँ पे जा रहे हैं? C से E पे. अब देखिए कॉस्ट कितनी यहाँ पे 7, पहले से कितनी है 6, तो मैं उसको कनेक्ट नहीं करूंगा. अगर मैं C से B पे जाता हूँ, कितनी कॉस्ट लग रही है 5, पहले से कितनी है 2, तो इसमें आप किसी को कनेक्ट नहीं करेंगे. आई हैव चेक्ड ऑल द ऑप्शंस.
अब मिनिमम क्या है, डी। अब डी को चेक करेंगे, डी से मैं कहां पे जा रहा हूं, डी से ई पे कितनी कॉस्ट लग रही है, 4, पहले से कितनी है, 6, तो पहले से गिवन कॉस्ट ज्यादा है, यहां से कनेक्ट करने की कॉस्ट कम है, तो मैं इसको इससे कनेक्ट करूंगा, दैट इज 4, और इसको मैंने 4 कर दिया, और जहां से मुझे 6 मिल रहा है उसको मैं डिस्कनेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूं, टोटल कॉस्ट इज 4, पहले से जो कॉस्ट गिवन है दैट इज 6, तो ये मिनिमम वैल्यू है, हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं, तो इन दैट केस मैं इसको कनेक्ट करके जहां से मुझे 6 मिल रहा था उसको डिस्कनेक्ट करेंगे। अलोंग दैट मैं डी से जा सकता हूं एफ पे, डी से एफ तक जाने की कॉस्ट कितनी है, 7, अभी वहां इनफाइनाइट है, तो मैंने उसको कनेक्ट कर दिया, तो मैं सारे ऑप्शन चेक कर सकता हूं डी के भी। अब जो नोड बच गए दैट आर ई एंड एफ, ई से मैं कहां पे जा पा रहा हूं, ई से मैं एफ पे, ई से एफ पे जाने की कॉस्ट कितनी है, 5, पहले से कितनी है, 7, देन इन दैट केस आई विल कनेक्ट, तो मैंने इसको डिस्कनेक्ट करके इसको 5 कर दिया, और जहां से 7 मिल रहा है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो मैं ई को भी चेक कर चुका हूं। लास्ट लोड मेरा एफ है, एफ से आप कहां जा सकते हैं, ई पे कितनी कॉस्ट है, 5, वहां ऑलरेडी 4 है, और इसको हम अभी पहले चेक कर चुके हैं, दैट मीन्स मैंने सारे नोड्स के लिए चेक कर लिया। अब मैं एक फ्रेश स्पैनिंग ट्री बना देता हूं, दैट इज इस साइड में हमें ए गिवन था, दैट इज बी सी डी ई एंड एफ, तो यहां पे हम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए ए को बी से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ए को सी से कनेक्ट कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट कितनी है, 2, इसकी कॉस्ट है 4, in the same way I am using this as, that is B to D, the given cost is 5, I am using D to E, D to E is 4, and I am using this one, that is E to F, the given cost is, sorry, that is 5, my mistake, not 4, that is 5, तो इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट इज 2 plus 4 plus 5 plus 4 plus 5, that is 5, so 2 plus 4 6 plus 5 11 plus 4 15 plus 5 20, so total cost for this given spanning tree is 20, that is the same cost in the case of Kruskal algorithm. So these are the two methods with the help of we can find out the spanning tree for the given graph directly, and always we should keep in mind there should not be any self loop like this, and there should not be any parallel edge, for example like this, that is not applicable whenever we are applying Kruskal and Phipps